Pardhi community is one of the 150 denotified Indian tribes. They are mostly found in the Indian states of Madhya Pradesh and Maharashtra. Pardhi tribes are among some 60 million Indians who are considered criminal by tradition. This stigma goes back over a century. इन जातियों को, इन जमातियों को ब्रिटिश सरकार ने चोर गुनहगार कहा था और इस प्रकार का 1871 में कानून बनाया गया कि पारधी रहे, वडार रहे, लमान रहे, ये चोरी करो या न करो, कहीं भी चोरी हुई तो इनको पकड़ना ही चाहिए। ये चोरी करना ही इनका धर्म है, इनके जात का। ऐसा कानून 100 साल अपने देश में था और फिर 100 साल कानून होने के बाद फिर क्या हो गया, पुलिस को लगा यही चोरी करते हैं, गांव वाले को लगा यही चोरी करते हैं और इसलिए कानून 100 साल रहने के बाद लोगों को आदत गिर गई कि कहीं चोरी होगी तो यही चोरी करते हैं। Under the Criminal Tribes Act of 1871, members of these tribes were forced to register with the police, forbidden to move around freely, and in many cases herded into barbed wire camps. The law was scrapped soon after India won independence. The criminal tribes were formally denotified in 1952 and Pardhis were named as nomadic tribes. Yet, the fortunes of many denotified tribes have hardly improved even after more than a half century. की पोलीस वाले काय आम्ही पारधी आहे म्हणून आम्हाला पोलीस वाले सारखे सारखे आम्हाला पकडून नेतात। कोण भी चोरी करते साहेब, कोण भी गुन्हा केला नाही केला, आम्ही काही गुन्हा भी करत नाही, अन्याय भी करत नाही, काही नाही साहेब, पण आम्हाला पकडून नेतात आणि आमच्यावर खोटी केस टाकतात। आम्हाला पुण्याला, मुंबईला, इकडे दिल्लीला, इकडे तिकडे पाठवून देतात साहेब। It was in 1998 that a writ petition was filed in Mumbai High Court to highlight the plight of Pardhis with the legal assistance of Human Rights Law Network. ने बहुत बड़ी मदद की है। कॉलिन गोंसावली जी, गायत्री सिंह जी अभी निहाल काम करते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की है। मुझे लगता है कि कॉलिन तो बहुत सारी पारधियों की बस्तियों में घुमा है, स्वयं घुमा है, गांव-गांव ऐसे पहाड़ों पर जाकर हम बताया है और इन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की है, जिनके कारण हम मुंबई हाई कोर्ट में केस दाखिल कर सकें। नहीं तो हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। गौर गरीब की बात के लिए एडवोकेट कॉलिन गोंसावली, गायत्री सिंह के हम बहुत बड़े इन पारधियों समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। It was argued in the court that though the draconian law has been scrapped, but Pardhis continue to be referred to as criminal by government officials and reporters. The High Court gave interim relief on the matter after the case was filed by the Human Rights Law Network. यानी कोर्ट ने ये रिलीफ दिया है कि भाई इनको चोरी करते हुए कोई पुरावा मिला तो ही पकड़ो इनको, ऐसे जात के नाम पर नहीं पकड़ना चाहिए, इनको हाजिरी नहीं लगाना चाहिए। 3 दिन गांव में रुकने देते थे, यहाँ गांव में रुकने देना चाहिए। Lalgarh village in Midnapur district of West Bengal became a center of unprecedented uprising by the local Adivasis in the year of 2009. The movement was triggered by the brutal police offensive against the villagers after a landmine attack on the state chief minister's convoy. In June 2009, more than 40 companies of paramilitary forces moved in Lalgarh and adjacent areas under a joint operation to suppress Maoist-led insurgency. The police and paramilitary forces occupied more than 12 school buildings. As a result, the children had to stop going to schools. In many cases, when children of various schools protested, they were beaten up brutally. আর্মি যখন এসেছিল তখন স্কুলটা খোলা ছিল, তারপরে অসুবিধা হওয়ার জন্য আর্মি এখানে ছিল, অসুবিধা হলো, ছাত্রছাত্রীদের দেখছি যে অনেক অসুবিধা হবে, তারপরে করলো কি এই স্কুল কিছুদিনের জন্য বন্ধ দিতে বাধ্য হয়েছিল আর্মি। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বলুন, হেডমাস্টার বলুন, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুল বন্ধ করেছে। A public interest litigation was filed in the Calcutta High Court by the Paschim Midnapur Bhumij Kalyan Samiti, a community organization of Adivasis from the Lalgarh area, with the legal support of Human Rights Law Network. In the court, it was argued gross violation of the fundamental rights as enshrined under the Constitution of India as a result of the occupations of the schools by the paramilitary forces. In June it happened and we were trying since June till September, but despite of filing deputations letters, no school, not a single school was vacated. So then we thought that approaching the court is the only option left to us.
So accordingly, we had a meeting of all the organizations who were working in Lalgarh area, and we kind of mutually decided that yes, we will approach the court. And there was this one organization called the Paschim Mednipur Bhumij Kalyan Samiti, who kind of agreed to be the petitioner, and then we filed this case in the High Court. ওনাকে বলেছিলাম প্রায় 8-10টা সংগঠন ওই দিন বসেছিলাম আমরা, অ্যাক্সিডেন্টের থেকেও এসেছিলেন, আমাদের এইচআরএলের দেবাশিস এসেছিল, আমরা মেদিনীপুরে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম করা দরকার। তারপরে বিভিন্ন যে ডেপুটেশনের কপি, ছাত্রদের হস্তাক্ষর সমস্ত সংগ্রহ করে ছবি টবি যা যা লাগে আইনে আমরা করেছিলাম, এবং করার পরে এটা হয়েছিল 2008-এ আপনার আগস্টে বসেছিলাম, সেপ্টেম্বরে আমরা জনস্বার্থ মামলা করি। The petitioner prayed for immediate direction upon the authorities to take immediate affirmative action to resume education in all the schools falling under blocks in West Midnapur and withdraw members of the law enforcement agencies from such schools. 4th of November 2009, that the High Court passed an order directing immediate vacating of all the schools and colleges. It will be better to say that all the educational institutions were directed to be vacated by the army immediately, and the High Court also passed an order directing that in all the schools mid-day meal scheme will be resumed. যখন আর্মি এসেছিল তখন আমাদের স্কুল বন্ধ ছিল, যখন চলে গেছে তখন আমাদের স্কুল যথারীতি খোলা আছে এবং ভালোভাবে চলছে। In India, cleaning manholes manually is a caste-based and hereditary occupation for Dalits that is predominantly linked with forced labor. There is no data on the occupational health and safety of sanitation workers, most of whom are employed on contract. Roughly more than 20,000 manhole workers, mainly from Dalit sub-community, die doing sanitation work every year across the nation. एक साल में 1000 सीवेज वर्कर